Hello friends, welcome back to your and my channel Civil Engineering Work Tuition. Friends, today we will see about a curing. When curing is done, how it's done, how many types the curing is done, and in which material is used for curing. So friends, let's begin. Please like our video, share our video and subscribe our channel. तो दोस्तों फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कास्टिंग वर्क मतलब कि आरसीसी वर्क कास्टिंग के बाद क्यूरिंग कैसे किया जाता है। पहले तो कॉलम पे हम गीला कपड़ा या फिर कंकान लपेट दिए जाते हैं ताकि पानी उस पर ज़्यादा समय तक रहे और इस कंकान से डालने से धूप से भी कंक्रीट को सहारा देता है। डायरेक्ट सनलाइट कंक्रीट के ऊपर नहीं पड़ती, इसीलिए कंकान डाल दिए जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लेबर है वो कंकान या फिर गीले कपड़े कंक्रीट जो कास्टिंग हो गया है आरसीसी ड्रो के ऊपर डाल रहे हैं ताकि पानी ज़्यादा समय तक आरसीसी के ऊपर बना रहे और आरसीसी वॉल या कॉलम या फिर आरसीसी स्लेब ज़्यादा समय तक गीला रहे। फ्रेंड्स, इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आरसीसी के ऊपर कंकान रखने से या फिर गीला कपड़ा रखने से पानी की क्षमता बढ़ जाती है और आरसीसी को सूखने में देर लगता है। इसकी वजह से आरसीसी का स्ट्रेंथ अच्छा हो जाता है और ये प्रक्रिया पूरे 7 दिन या फिर 10 दिन तक चलता है। जैसे पानी छिड़कने के लिए पाइपलाइन का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीवीसी की पाइप या फिर गार्डन की पाइप यूज़ की जाती है। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Woo. Woo. Stop. Stop.
Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Stop.